contention, then my lord, please see. That is, my lord, annexure P7. ये P7, yes. annexure P7 देखिए। मैं सरिता लरिया, उम्र 38 वर्ष, सो मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है, मेरे दो छोटे छोटे, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी भी आ गई, मेरी सासू सो। इसमें लिखा मेरे पति का कोई संपत्ति नहीं और मैं 10वीं पढ़ी लिखी हूँ। आवेदन पत्र, अंशकालीन भृत्य की नौकरी। मेरे आवेदन पर मुझे अंशकालीन भृत्य की नौकरी दी गई थी, जो कि दो साल बाद मार्च 2020 को समाप्त कर दी गई। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और मुझे नौकरी से बिठा दिया गया। मैं आज बेसहारा हूँ। बाद मार्च 2020 को समाप्त कर दी गई। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मुझे नौकरी बिठा दिया गया। आज मैं बेसहारा। मेरे पति ने 25/7/1998 से लेकर 17/1/2018 तक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मेहंदवानी में भृत्य के पद पर नौकरी की थी और उनके साथ नियुक्त कर्मचारी का नियमितीकरण भी हो गया था, जैसा कि अशोक दास। मेरे पति का स्वर्गवास अचानक हृदयघात से हुआ और अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक वे ठीक ड्यूटी पर गए थे। उनकी मृत्यु के उपरांत हमारा परिवार बेसहारा हो गया। मैंने उच्च न्यायालय की WP नंबर 100 दायर की गई थी, जिसमें यह दिया गया कि मेरा निराकरण किया जाए, पर निराकरण नहीं किया, अतः अब किया जाए। नाउ this is my first order, that is annexure P6, and my lord, annexure P4, which I read, my lord, that contains a recommendation in my favor. That recommendation part we have not read, my lord. कृपया स्वर्गीय annexure P4 के बॉटम में देखिए सर, पेज नंबर 20। कृपया स्वर्गीय सुरेश दास लारिया, दैनिक वेतन भोगी, सो के पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उनके आवेदन के अनुसार नियमित पद मान्य किए जाने की अनुशंसा की जाती है और अतएव उनके संबंध में उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। और इन लोग मेरे को बार बार अंशकालीन, एनेक्चर P5 इज माय अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अंशकालीन, और वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया। एनेक्चर P5 विषयांतर्गत श्रीमती सरिता लारिया सो को अनुकंपा नियुक्ति न होने से संस्था में अंशकालीन भृत्य के रिक्त पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फिर अगेन आई अप्रोच द हाई कोर्ट व्हेन आई वाज डिसकंटिन्यूड, दैट डायरेक्शन वाज गिवन इन एनेक्चर P6, then I again gave representation, nothing happened, then I approached the high court, then high court, lord, white page number 30, again directed that he should give that is my lord's order, lord. That is your lordship's order. क्या कहा उसमें? आपने लिखा हुआ है, after hearing counsel for the parties, it is evident that as far as compassionate appointment is concerned, that is not available to a dependent of daily wager. However, since petitioner was engaged against a vacant post of a part-time peon, therefore taking into consideration a fact that the petitioner has already moved a representation dated 16/3/21, authorities concerned are directed to decide the same within 30. How can you raise another claim for compassionate appointment when it already stood decided earlier? Res judicata लगेगा नहीं लगेगा? Whatever it, but do you decide my representation? Whatever नहीं वकील साहब, पिटीशन बनाते वक्त इतना तो ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कुछ भी पिटीशन बना देंगे हाईकोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए। How this same prayer can be again agitated once I have already categorically held? You could have challenged this order that you are not entitled to compassionate appointment. सही बोल, सही बोल। देखिएगा श्री NS Rupra, after arguing at length and after reading order passed by this court in WP 10774 of 2021, decided on 26/10/2021, is in agreement that once the claim for grant of compassionate appointment was negativated on the ground that petitioner, being a dependent of a daily wager, is not entitled to the same, same should not have been raised again, full stop. He admits that this amounts to misuse of the procedure. No, please don't say all अच्छा that. सर, ठीक है, चलिए आप लिखें, ठीक है। According to me, it is misuse of the procedure. आप बोल दीजिए। हाँ, heavy cost should have been imposed, but looking to the status, fragile status of the petitioner, cost is not being imposed. But counsel should have been careful while drafting the petition, especially when counsel in both the petitions are the same. Full stop. Earlier petition WP 10774 was also filed by the same counsel who has filed this petition. Next para.
Thus, the only bone of contention which remains is that petitioner who was given a part-time engagement in the year 2020 via Annexure P7, P5. P5, P5 has been removed from that part-time engagement, and therefore this petition can be disposed of by directing the Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department, Nindori, to take into consideration the fact that whether that post of part-time peon is still available or They will not. not. They will not obey previous order also. Please wait. Please wait. आप तो Is सीधे available. he is not Available. entitled to any relief. खत्म हो गया. Please. You will not dictate, Mr. I will Rupra. humble prayer. No, that was not a way of making a humble prayer. Sorry, we understand the difference between a humble prayer and a dictation. क्या लिखा? Available. Then, whether petitioner is qualified to hold that post or not, and whether in view of the fact that her claim for compassionate appointment has already been rejected and petitioner's reliance on Annexure P8, which is GAD circular dated 31/8/2016, is misplaced because that deals with the cases of the members of the work charge and contingency paid establishment and not of daily wages, comma, let reply be filed by the respondent number 3 and 4 within 2 weeks. List on 3 and 4 within 2 weeks only on the issue of her part-time engagement, her entitlement to part-time engagement and availability of the post. Full stop. Other issues, since already stand settled, will not be allowed to be raked in again. List on 6 फरवरी 2024. Serial number